Our today's topic is thermocouple, its construction, principle, working, and its application. We will also see Seebeck Effect, Peltier Effect, Thomson Effect. First of all, we need to see that what is a thermocouple. A thermocouple is a temperature measuring device that is discovered by Thomas Seebeck in 1821. A thermocouple is a device made by joining two dissimilar metal wires. एक्चुअली थर्मोकपल जो होता है ये दो डिफरेंट टाइप की जो मेटेलिक वायर्स को जोड़ने से बनाया जाता है। जैसे आपके सामने एक मेटल 1 रेड कलर में शो की गई है और दूसरी मेटल 2 ब्लू कलर में शो की गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कह देते हैं कि ये आयरन है और ये कॉपर है, तो इन दोनों को जब हम इस तरह से जोड़ते हैं कि ये एक लूप की शेप इख्तियार कर लेती हैं और उस लूप के दो जो जॉइंट्स होंगे उनमें से एक को अगर हम हीट अप करें तो जो जॉइंट या जिस जंक्शन को हम हीट अप करेंगे उधर से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है टूवर्ड्स दी सेकंड जंक्शन। ये इस थर्मोकपल का एक प्रिंसिपल है जिसके तहत ये काम करता है। When two junctions are at different temperatures, अगर इसके अंदर वो कहता है कि दो जंक्शन हैं और दोनों का जो टेम्परेचर है वो इसका टेम्परेचर एज कम्पेयर टू सेकंड जंक्शन ज़्यादा है और इस के अंदर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, ईएमएफ डेवलप होती है जिसकी वजह से अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो इस चीज़ को कहते हैं कि व्हेन टू जंक्शंस आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड ईएमएफ इज जनरेटेड एंड दिस ईएमएफ इज नोन एज thermoelectric EMF and is used to measure the temperature. अब जो EMF इसके अंदर जनरेट होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि हम उस टेम्परेचर के इंक्रीज को इस EMF की मदद से जो कि पैदा हुई है हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। यही थर्मोकपल का पर्पस है, दैट इज टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। और ये सीबेक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करती है। सीबेक इफेक्ट जो है वो सबसे पहले थॉमस सीबेक 1821 के अंदर डिस्कवर किया था। ये सर जो सीबेक थे इन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि सीबेक इफेक्ट अक्सर when two different conductive materials are joined at two junctions, जैसे ये आपके सामने एक जंक्शन ये और दूसरा आपके पास ये जंक्शन। अब जो आपके पास एक जंक्शन है उसको हम क्या कर देते हैं, हीट अप करते हैं और वो हॉट जंक्शन बन जाता है। तो जब वो हॉट हो जाएगा तो वो कहता है कि दिस टेम्परेचर डिफरेंस creates the voltage across the media leading to an electric current if circuit is closed. अगर ये आपका सर्किट क्लोज है तो इसके अंदर एक करंट फ्लो करेगा और वो जो करंट होगा वो ईएमएफ की वजह से होगा और ईएमएफ जो है वो टेम्परेचर और जंक्शन के हाई टेम्परेचर की वजह से। The EMF is proportional to the temperature difference between the junction. मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E is equal to alpha T1 minus T2
अब ये जो T1 है ये आपके पास हॉट जंक्शन का टेम्परेचर और T2 कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है। इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T को जब हम अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाती है आपके पास ये अल्फा जो है ये सीबेक कोएफिशिएंट है। दूसरा जो इफेक्ट आता है दैट इज पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट is named after the French physicist named Jean-Charles Peltier, who discovered it in 1834. अब ये जो पेल्टियर इफेक्ट है that is totally the reverse process of Seebeck effect. कैसे देख लेते हैं इसको। इसमें भी आपको दो डिफरेंट मटीरियल की जो बाइंड को आपस में जोड़ना है और इस तरह से जोड़ना है कि आपके पास अगर इन दोनों जंक्शंस का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंस बन जाता है, एक हॉट जंक्शन है दूसरा कोल्ड जंक्शन है, तो आप ये देखें कि ये जैसे ही आप इसके अक्रॉस करंट फ्लो करवाएंगे, जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा तो एक जंक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे चला जाएगा और दूसरा जो जंक्शन होगा वो कोल्ड हो जाएगा। मतलब बात करने का ये है कि इसमें हमने टेम्परेचर खुद से प्रोवाइड किया था, टेम्परेचर डिफरेंस खुद से क्रिएट किया था और हमें मिला था करंट। जबकि पेल्टियर इफेक्ट में हम करंट देते हैं, डीसी सोर्स से हम करंट सप्लाई करते हैं दो डिफरेंट मेटेलिक वायर्स को, तो कुछ देर के बाद वो दोनों जो जॉइंट्स होंगे वो जॉइंट्स डिफरेंट टेम्परेचर पे चले जाएंगे। जो एक टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा और दूसरे जॉइंट का टेम्परेचर कम होगा। एक कोल्ड जंक्शन बन जाएगा, एक हॉट जंक्शन बन जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? When electric current passes through a junction of two metals, heat is either absorbed or released. जब करंट हम जंक्शन में से पास करवाते हैं तो हीट इसमें एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है। वन जंक्शन बिकम हॉट, जैसे आपके सामने है ये वाला जंक्शन हॉट हो गया और दूसरा जंक्शन कोल्ड हो गया। वन जंक्शन बिकम हॉट एंड द अदर बिकम कोल्ड। मैथमेटिकली Q equals to पाई I। इसमें जो पाई है वो पेल्टियर कोफिशिएंट है, I करंट है और Q अमाउंट ऑफ हीट absorbed or released, that is per unit charge and proportional to the temperature and Seebeck coefficient alpha। इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि अगर आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू है 20 माइक्रो वोल्ट पर केल्विन और टेम्परेचर आपके पास है 300 केल्विन, तो हमारे पास जो आएगा पाई की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, जो आपके पास प्रोड्यूस होगी सीबेक इफेक्ट की वजह से अल्फ़ा इज गिवन 20 माइक्रोवोल्ट पर केल्विन एंड टेम्परेचर 300। कितना आपके पास उधर से पोटेंशियल डेवलप होगा 0.006 वोल्ट का, या इसको जो केल्विन की शक्ल दैट मीन्स ईच कूलम ऑफ चार्ज carries 0.006 joule of heat energy at the junction। यानी जो उसके अंदर चार्ज फ्लो करेगा वो इतनी एनर्जी हीट की फॉर्म में ले आएगा। नेक्स्ट थर्ड इफेक्ट इज थॉमसन इफेक्ट। दिस थॉमसन इफेक्ट is described by
William Thomson in 1851. According to the Thomson effect, when current flows through a homogeneous conductor, ये आपके सामने कंडक्टर बनाया और उसके अंदर से करंट को हमने फ्लो करवाया। जब आप इसमें देखेंगे कि ये एक एंड आपके पास हाई टेम्परेचर पे, ये आपके पास लो टेम्परेचर पे, और इसमें करंट फ्लो करता है। जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो इसमें हीट क्या करेगी, इवॉल्व होगी। और अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। इसका क्या मतलब है, करंट फ्लो थ्रू द होमोजेनियस कंडक्टर। अगर आपके पास इस होमोजेनियस कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है विद अ टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, अगर उस कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो उसके अंदर से गुजरने वाला जो करंट है वो क्या करेगा, या तो हीट एब्जॉर्ब करेगा या हीट इवॉल्व करेगा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड इफेक्ट, नॉट लिमिटेड टू द जंक्शन। इसमें जंक्शन जो है वो लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं Q इक्वल टू tau I dt over dx, where tau is the constant constant and tau equal to E into d alpha over dt, which describes how Q is absorbed or evolved during a superconductor when both electric current I and temperature gradient dt over dx exist in it. Another thermoelectric phenomenon besides Seebeck and Peltier. This is the relationship between Seebeck, Peltier and Thomson effect. First of all, Seebeck coefficient alpha measured in volt per Kelvin, and Seebeck effect E equals to V equals to alpha into delta T, and the Peltier coefficient is pi equals to alpha T, Q equals to pi L I, the Thomson coefficient tau equals to T d alpha over dt, heat absorbed by degrees per Kelvin. These relations prove that Seebeck, Peltier and Thomson effect are not separate phenomena. They are interrelated aspects of the same thermoelectric behavior. And these relations also ensure that when electrical and thermal energies are interconverted, मतलब जब हम हीट देते हैं तो वो हीट किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बारे में कह रहा है कि they ensure that when electrical and thermal energies are interconverted, ये बैटरी वो हीट से गैस में कन्वर्ट होती है। जैसे कि पेल्टियर इफेक्ट के अंदर आपका जो करंट है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ओवरऑल इसके बारे में लिख सकते हैं, लो एनर्जी लॉस आर क्रिएटेड thus satisfying the law of conservation of energy. If you want to see the summary of these three effects, that is Seebeck effect means temperature difference creates EMF, Peltier effect means current generates the heat at junction, and third effect, that is named as Thomson effect. In this Thomson effect, when current plus temperature gradient gives us heat along the conductor. Also, all of you guys will understand these physical effects. Together, these effects form a foundation of thermoelectric. If we want to discuss the types of thermocouples, there are different types of thermocouples.
type that consists of chromal and aluminum, and its temperature range is minus 200 degrees Celsius to 1250 degrees Celsius. Its cost is low and having the good accuracy and used for general purposes. And J type consists of iron, constant temp, and temperature range is minus 40 to 750. Its cost is also low and accuracy is there. The main use in older devices. P type consists of copper and constant temp. Temperature range minus 200 degrees to 350 degrees Celsius. Its cost is also low and accuracy is high. So main use of this type of thermocouple in cryogenics. And the E-type met chromal constant temp minus 200 to 900 degrees Celsius range. Its medium cost with high accuracy used in labs. N-type microscale and mainly minus 200 to 1300 degrees Celsius. Cost is medium, but accuracy is very good. So main use at high temperature places such as in boiler or furnace of power plants and fertilizer plants. S-type metal platinum its temperature range is 0 to 450 with very high cost. That's why their accuracy is excellent and used in research labs. R-type temperature range is 0 to 1450 degrees Celsius. Cost is very high. That's why accuracy is excellent and main used in research labs. And other type of thermocouple is B-type. Its temperature range is much high, 0 to 1700 degrees Celsius, and that's why its cost is also very high, but very good excellent accuracy and used in furnace. Now we want to discuss the advantage of thermocouple. First of all, due to wide temperature range, can measure minus 200 degrees Celsius to 1700 degrees Celsius depending on different types, as in previous table we see. And the thermocouples are fast, having the fast response quickly to temperature change, and these are simple and rugged, means strong, durable, and can be used in harsh environment. Small size, easy to install in small or difficult spaces. No external power heater. These thermocouple generates its own voltage, so no other external power is needed in their operation. These are low cost, cheaper than RTDs or thermistors, and variety of types. As we see in previous table, there are a lot of variety of thermocouples. These, beside these advantages, there are some disadvantages of the thermocouples. One of them is low accuracy, less accurate compared to RTD and thermistor. Thermistor और RTD की निस्बत accuracy low होती है. Requires reference junction. इसके साथ हमें एक reference junction की ज़रूरत होती है. ये इसको cold junction का नाम देते हैं. Gas compensation is needed, otherwise it cannot work properly.
Third disadvantage is non-linear output. EMF versus temperature curve is not perfectly linear. Fourth disadvantage is possible drift. Calibration may change over time, especially at high temperature. And fifth disadvantage is electrical noise sensitivity can pick up interference. The noise आ जाता है, interference आ सकती है, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट की वाइब्रेशन होती है। इसके अलावा इन थर्मोकपल्स की जो हमारी डेली लाइफ के अंदर एप्लीकेशन हैं वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रियल फर्नेसेस एंड किलर में, for monitoring the high temperature in steel factory, glass and cement industry, power plants under temperature control of turbine, boiler and exhaust gases. Fourth application in laboratories, used in experiments and calibration setups. घरों के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, गैस सेंसर्स के अंदर, पानी के हीटर के अंदर, सेफ्टी सेंसर्स के अंदर, एरोस्पेस के अंदर, जेट इंजन, एग्जॉस्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टेम्परेचर टेस्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा क्रायोजेनिक्स में यानी कि लो टेम्परेचर लेबॉर्ट्रीज के अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अगर आपको नज़र आ रहा है कि टी टाइप एंड टी यूज फॉर वेरी लो टेम्परेचर। थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स से यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स के अंदर थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज होता है। पेल्टियर कूलर रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं या आइस फैक्ट्री के अंदर हम पेल्टियर इफेक्ट को यूज़ करते हैं। यूज पानी सिस्टम पावर जनरेशन का फ्रॉम वेस्ट हीट space cloud thermoelectric power sources. If we want to discuss the aspect with respect to advantage, disadvantage and its application, simple summary of these thermocouples are accuracy, good for general use, not very precise, so they are used in lab and field. If we want to see the range, they have a wide range. This is the advantage. That's why in industrial furnaces, if we see the cost, they have low cost, and that's why we use in home appliance. And if we want to see the durability, they have strong durability, and this is very strong advantage. And the disadvantage is quick over time के साथ इसकी durability कम भी हो जाती है इंजन अंदर और प्लांट में होता है। तो आज तक के लिए